अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स4 ओवर एक्स4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेट n इज इक्वल टू x4 एंड d इज इक्वल टू x4 plus 4 x k plus 4 as it is in proper fraction. So first we convert it into proper fraction by division. डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 minus 4x square plus 4 over x square plus 2 का whole square. Now 4x square plus 4 over x square plus 2 का whole square is equal to x plus b over x plus 2, x square plus 2 plus x plus d over x square plus 2 का whole square. Multiplying both sides by x square plus 2 into x square का whole square, we get 4x square plus 4 is equal to x plus b into x square plus 2 plus cx plus d. स्टूडेंट, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करना है, देन एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर सिमिलर वेरिएबल्स वाले टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है, जैसे एक्स स्क्वायर वालों को एक्स वालों को। देन हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना। तो वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस 2a प्लस c into x plus d. Now we have to compare coefficients of x cube, x square, x and constants of equation 3 on both sides. We get, when we compare x cube, we get a is equal to 0. By comparing x square, we get value of b which is 4. By comparing x, we get value of c which is 0, and by comparing constant, we get value of d which is 4. Now put values of a, b, c, d in equation 1. We get 4x square plus 4 over x square plus 2 का whole square is equal to 4 over x square plus 2 plus 4 over x square plus 2 का whole square. Now this is equal to 1 minus 4 over x square plus 2 plus 4 over x square plus 2 का whole square. So question number 5 हो चुका हमारा complete. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.